हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक लॉर्स पे। तो आज हम लोग बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। एंड हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। एंड कंपोजिशन ऑफ एनएचआरसी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। डिवीजन ऑफ एनएचआरसी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शन एंड पावर ऑफ एनएचआरसी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉज हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 केस लॉ इन दिस वीडियो। एंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्लेंट एडमिटेड बाय एनएचआरसी की कंप्लेंट कैसे एडमिटेड होती है एनएचआरसी, type of recommendation made by the NHRC, and important guideline issued by the NHRC and other human rights institution in India. All this we are going to discuss in this video. So चलिए शुरू करते हैं. Let's start. So important of the NHRC. The National Human Rights Commission of India was established on 12 October 1993. The statute under which is established its Protection of Human Rights Act 1993 as amended by the Protection of Human Rights Amended Act 2006. Okay, and it is in conformity with the Paris Principle adopted in the first international workshop on the National Institution for the Promotion and Protection of the Human Rights. Protection of Human Rights held in Paris in October 1991 and endorsed by the National Assembly of the United Nations by its Regulation 134 of 20 December 1993. The NHRC is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of the human right. Okay, and Section 2(1) Clause D of PHRA define human right as the right of related to the life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international conventions and enforcement by the court in India. So ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएचआरसी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. इंट्रोड्यूस यू टू द मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ह्यूमन राइट. ये आपको इंट्रोड्यूस कराता है कि मैकेनिज्म क्या होगा ह्यूमन राइट का इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए. एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द रोल एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन. आपको रोल क्या है ह्यूमन राइट कमीशन का ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. ओके, हेल्प यू टू लर्न अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट. Detailed working of NHRCs and contribution toward protection and protection and promotion of human rights. In this unit, we will examine in detail the working of NHRC and its contribution toward the protection and promotion of human rights. We will also learn about the various functions of NHRC and how it's inquired into the complaint of human rights violation, including the process, method and guideline developed by NHRC of protection of human rights. So all this we are going to in this video. Okay, composition of the human right. अब composition देख लेते हैं क्या होती है human right like national human right commission की. So a chairperson who has been chief justice of Supreme Court or retired chief justice of Supreme Court. Okay, and one member who is has been judge of Supreme Court. और एक member होगा जो Supreme Court का judge होगा. One member who is or has been chief justice of High Court. And 2 members to be appointed from among person having knowledge of practical experience in the matter related to the human right. और 2 person ऐसे होंगे जिनको human right की जो केसेस हैं उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा. उन लोगों को 2 को हम लोग मेंबर्स बनाएंगे. द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन्स आर डीम्ड मेंबर of the commission. Okay, there is a secretary general who is the chief executive officer of the commission and exercise such power and discharge such function as delegated to him by the commission or chairperson as case may be. Okay, division of NHRC. There is a 6th division of NHRC. This has been entrusted and specified tasks and they work in close consultation and coordination. So these 6 division are like मैं आप बताता हूँ आपको जो division है वो 6 division कौन कौन सी है. So let's see. The first one is the administrative division, and the second one is the law division, third one is the training division, fourth one is the policy research and project division, the investigation division,
and fifth one is the information and public relation division. The primary function of NHRC is to conduct inquiry into the violation of the human right. So suppose there is any human right violation, in that scenario the primary function of the NHRC is conduct the inquiry in such kind of situations. So NHRC conduct inquiry for the following category of the violation. अगर violation of the life and liberties, equality and dignity एंड वॉल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रीटीज टू विच इंडिया इज अ पार्टी, अगर ऐसी कोई ट्रीटीज़ हैं और जिसका में ह्यूमन राइट कोलिशन होता है तो द ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज रिव्यू सच काइंड ऑफ ट्रीटीज. अबेटमेंट ऑफ द वॉल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट इन पब्लिक सर्वेंट लाइक बाय पब्लिक सर्वेंट. सो अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन होता है, अबेटमेंट होता है, तो इन दैट सच काइंड ऑफ सिनेरियो आपका जो NHRC है वो एक कंडक्ट कराएगा इंक्वायरी. नेग्लिजेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन प्रिवेंशन ऑफ द ह्यूमन राइट वॉल्यूशन, और अगर कोई नेग्लिजेंस भी होता है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा तो उस सिनेरियो में भी ह्यूमन राइट लाइक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक इंक्वायरी कंडक्ट कराएगा और वो अपने मेजर लेगा कि इस तरह की जो है चीज़ें इन फ्यूचर ना हो. फंक्शन एंड पावर ऑफ NHRC. तो NHRC की फंक्शनैलिटी क्या क्या है और उसकी क्या क्या पावर है ये भी हम लोग देख लेते हैं. सो इंक्वायरी इनटू द ह्यूमन राइट वॉल्यूशन ऑन इट्स ओन or on the petition by the victim or any person or on or her on his or her behalf intervene in any proceeding involving any allegation of violation of human right pending before a court. So human right का अगर violation होता है, अगर सू मोटो भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं या फिर उस पर्सन की एक पिटिशन के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकते हैं या फिर किसी पर्सन ने उस पर्सन के बिहाफ पे अगर पिटिशन डाली है. सो इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो और किसी भी तरह का अगर कोई एलिगेशन और किसी भी तरह की कोई लीगल प्रोसीडिंग लाइक इन द कोर्ट में चल रही है, सो अभी इन सिनेरियो में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है. सो विजिट जेल, हॉस्पिटल, जुवेनाइल होम, मेंटल हॉस्पिटल एक्सेट्रा. तो रिफॉर्म करने के लिए जेल्स को, हॉस्पिटल को, जुवेनाइल होम्स को, लाइक उनकी यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं, देयर इज़ नॉट वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स, उनका जो ह्यूमन राइट्स है उनकी जो बेसिक नीड है उसका तो वायलेशन नहीं हो रहा है. तो वो सब चीज़ें आपकी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखती है. एंड टू स्टडी द लिविंग कंडीशन ऑफ द इनमेट्स, और वहाँ पे रहने वालों की लिविंग कंडीशन क्या है, किस तरह की सिचुएशन है, ये सब चीज़ वो यहाँ पे देखते हैं. रिव्यू द लॉ एंड प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. और रिव्यू करते हैं कि जो लॉ है उसका प्रोसीजर क्या है या प्रोटेक्शन जो ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन कर रहा है, और अगर कहीं पे ये उसको कोई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए कोई रिकमेंडेशन जरूरी है तो फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहाँ पे NHRC अपनी रिकमेंडेशन भी देती है. रिव्यू द फैक्टर इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म दैट इनहेबिट the enjoyment of human right and recommended appropriate remedial measures. और review करते हैं factor including like act of terrorism that inhibit to the enjoyment of the human right and recommend appropriate remedial measure, और उसके लिए जो appropriate remedies measures हैं उसको भी वो लोग बताते हैं, recommend करते हैं. Study treaties and other international instrument on human rights, जो हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ में इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उसको स्टडी करते हैं एंड मेक द रिकमेंडेशन ऑफ देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, और उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देते हैं. एंड अंडरटेक द प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, और जो लाइक अंडरटेक द प्रमोट रिसर्च इन, अगर जो ह्यूमन राइट के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं उसको भी प्रमोट करना, उसको लेना, दैट्स द वर्क ऑफ NHRC. स्प्रेड ह्यूमन राइट लिटरेसी, और ह्यूमन राइट के लिए लिटरेसी सोसाइटी में बढ़ाना, दैट्स द वर्क NHRC इज डूइंग एंड दैट्स द रिकमेंडेबल. एनकरेज द efforts of non-government organization and institution working in the field of human right. So encourage करना NGOs को encourage the efforts of non-government organization and institution working in the field of human rights. So encourage करना efforts को non-government organization के और institution के जो कि human rights के field में काम कर रहे हैं. Important case decided by the large scale of incidents communal violence. Okay, so NHRC was reported in Gujarat during February-March 2002.
About 3,000 people belonging to the minority Muslim community were killed and property was destroyed. The Gujarat state government and its police did not take appropriate measures to prevent violation and failed to provide safety, security and justice to the victim of Muslim minority community. What can be done in this type of situation to mass care of people in collision with the state? Does NHRC have the power to inquire suo motu into the case of Gross? The following are some of the important cases which have been taken up by the NHRCs and created a positive jurisprudence to prevent violation of human rights. The training will appreciate and understand the role of NHRC in protection and promotion of human rights through these selected cases. Case 1, Gujarat route violation of human rights. The National Human Rights Commission had initiated a suo motu inquiry into these taken suo motu cognizance of media report incidents and directed the state government about undertaking a mass grave in the report of measures taken on restore peace Ludwana village of Panchmahal district of in state of Gujarat. The commission also approached the Supreme Court of India on Gujarat and commission ने Supreme Court को भी approach किया इस case में. The commission sought a report from behalf of the victim of the Gujarat routes and commission ने एक report prepare की जो victim है उनके behalf पे जो गुजरात दंगों में victim थे. The state government and CBI in the matter and state government और CBI भी इस matter में है. Case 2, Punjab mass crimination. The National Human Rights Commission awarded compensation of 1.75 lakh each of the next to the kin of 1051 victims of the Punjab mass crimination case. The commission found that the bodies of these persons were criminated by the state authorities in violation of the rule of crimination of unidentified bodies. The act amounted the violation of the dignity of the dead and hurt emotion and sentiment of their kin who would have preferred to perform their last rite, the commission held. So commission ने कहा कि जो dead person है उनकी dignity का और जो उनकी जो violation हुआ है और fundament like this is hurt the emotion and sentimental of the people as well. So उन्होंने यही बोला कि इस केस में कि dignity है dead person की भी कुछ dignity होती है आपने उसका violation किया है state authorities ने. The Punjab government was directed to deposit 18 crore 39 lakh 25,000 rupees within 3 months for the distribution of the next to the king. The case is a shocking incidence of gross violation of the human right where a large number of human bodies were criminated by the Punjab police. The case was referred to NHRC by the Supreme Court. The commission found that the state of Punjab accountable and responsible for the infringement of the right of life and of the deceased. And again on 8 March 2006, commission grant compensation in respect of 38 more person. So 8 मार्च को 2006 में कमीशन ने 38 और लोगों को कंपनसेशन ग्रांट किया और इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रेफ़र किया था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और यहाँ पे इन्होंने पाया कि जो कमीशन ने पाया कि स्टेट पंजाब अकाउंटेबल है रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्रिंजमेंट के लिए राइट ऑफ लाइक लाइफ ऑफ डिसीज. सो जो इन्होंने वायलेशन किया इन्फ्रिंजमेंट किया है डेड पर्सन की जो राइट्स होते हैं उनका और इसमें इन्होंने सब लोगों को कंपनसेशन दिया. केस 3 स्टारवेशन डेथ इन उड़ीसा. सो उड़ीसा में स्टारवेशन का केस भुखमरी का केस है. ये तीसरा केस है ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जिसका कॉग्निजेंस लिया गया. द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू कॉग्निजेंस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ डेथ of people due to starvation in Koraput, Bolangi and Kathalging district of Orissa. It sent a team to report about the existing condition. It's also appointed a special reports to look after the relief and rehabilitation work. NHRC periodically review the measures taken by the state government and prevent starvation death. सो NHRC ने एक रिव्यू भी किया एंड मेजर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उनको देखा और स्टारवेशन डेथ को रोकने के लिए इन गाइडलाइन भी इशू की. केस 4 एनकाउंटर डेथ इन आंध्र प्रदेश. द आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमीशन complained to NHRC about encounter death where the people were killing
people on the suspension of being member of People's War Group. The police said that the death took place when armed militant resisted arrested, but the Andhra Pradesh Civil Liberty Commission insisted that they were extrajudicial killing amounting to unjustified and unprovoked murder. सो यहाँ पे बोला कि आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टी कमीशन ने कंप्लेन की एनएचआरसी को कि एनकाउंटर डेथ पुलिस के द्वारा किया गया है लोगों को सस्पिशियस के बिहाफ पे कि वो सस्पिशियस थे कि वो लोग मेंबर है पीपल ऑफ ग्रुप लाइक वॉर ग्रुप के, बट दे आर नॉट, एंड दे गेव द डिटेल ऑफ 285 सच इंसिडेंट्स, और उन्होंने 285 ऐसे इंसिडेंट्स की डिटेल्स एनएचआरसी को प्रोवाइड कराए. NHRC inquiry into 6 cases involving the death of 7 people and formulated guideline in 1997 for the first time in India detailing the procedure in respect of encounter death. So 1997 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक डिटेल गाइडलाइन फॉर्मुलेट की कि आपकी एनकाउंटर के बारे में. Complaint admitted by NHRC. So filing the complaint before the establishment of NHRC, it was difficult to file complaint against police abuse unless the victim has a strong backup support and courageous enough to face all the consequences from the police. So पुलिस के लाइक ऐसा आपको सबको ही पता है कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट करना इट नॉट इजी अगर पुलिस अब्यूज़ आपको कर रही है, अनलेस लाइक विक्टिम के पास में एक अच्छा बैकअप है और वो उसके पास में करेज है, लाइक जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आई विल लाइक हैंडल इट. अगर कोई पॉलिटिकल आदमी है या पावरफुल आदमी है तो उसके ही अंदर ऐसा करेज होता है कि वो पुलिस के खिलाफ कुछ कर पाए, एंड इफ ही नो द राइट्स एंड ही नो द लॉ so he can do so. So there are very few cases of complaint filed against police in local criminal courts as a private complaint. So with the establishment of NHRC, a new manual was provided to the victim of police abuse for filing complaint. So NHRC के establishment से लोगों को एक नया रास्ता मिल गया कि वो NHRC के थ्रू भी पुलिस अब्यूज़ के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं. कंप्लेंट में भी फाइल इन हिंदी, इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और जो कंप्लेंट है वो हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते हैं जो कि 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है. नो फी विल बी चार्ज फॉर फाइलिंग कंप्लेंट, और कंप्लेंट फाइल करने के लिए कोई फ़ी नहीं है. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. द कमीशन में बी आस्क फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन एंड एफिडेविट टू फाइल इन सपोर्ट ऑफ एलिगेशन वेदर कंसिडर नेसेसरी. सो कमीशन आपसे ये पूछ सकता है कि फर्दर इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप एफिडेविट प्रोवाइड करा दीजिए जो कि आपके एलिगेशन के सपोर्ट करते हों, अगर उनको ऐसा मैंडेटरी लगता है, नेसेसरी लगता है तो इन दैट सिनेरियो. And a commission may be discretion except the telegraphic complaint or complaint conveyed through the fax. Okay, fax or email. Like a commission may be discretion except telegraphic complaint and complaint conveyed through the fax or email. Complaint also made on the mobile telephone number of the commission, like you can go through the website and you can check it out, the right number, email address and like fax number, so you can do so. Type of the recommendation made by the NHRC. पे कंपनसेशन टू द विक्टिम और विक्टिम फैमिली, विक्टिम की फैमिली को या फिर विक्टिम को कंपनसेशन के लिए एनएचआरसी रिकमेंडेशन देती है. पे डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी पर्सन, जो गिल्टी पर्सन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन वो लेने के लिए लाइक रिकमेंडेशन देते हैं कोर्ट को. दे आर इनिशिएट प्रोसीडिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन, टेक प्रिवेंटिव मेजर as to stop further human right violation. So important guideline issued by the NHRC. On the primary mandatory of the NHRC is inquiry into the death of police custody and in the prison. The first important instruction issued by NHRC in its first year to all the state government is on mandatory reporting to the custodial death and rape. NHRC directed on 14th December 1993 to the district magistrate and superintendent of the police to report to the commission incidents of the
custodial death and rape within 24 hours and stated that failure to send a report within a stipulated time would be presumed as suppression of the incidents. The mandatory reporting was extended to death in prison in 1994. Later, NHRC also issued direction on encounter death. NHRC also comprehensive guideline on pre-arrest, arrest and post-arrest after the DK Basu case. Okay, so thanks for watching the video, and please like, comment and share and subscribe the channel as well. Thank you very much.